last part of this playlist for now, case number 10. The first three terms in the expansion of 2 plus ax raised to the power n, this, in ascending powers of x, are this. ये तो बाद की बात है, पहले इसको expand करना है. How do we expand this? Let's give that a shot. So we've got 2 plus ax raised to power n. What's the formula? N, because n अभी unknown. NCR. NCR. All right. A, which is 2. 2. N minus R. N minus And what is B? AX. Which is R. Oh, okay. What next? अब हम Don't we usually take the first value of R as 0? जी अब हम वो शुरू करें. चलें तो formula अलहदा लिख लेते हैं. So n minus R and b to the R. This is going to be 0, 0 and 0, right? So this is 0, this is 0 and this is 0. What next? How far are we supposed to expand it up till? इन्होंने हमें 3 ऑलरेडी असेंडिंग पावर x स्क्वायर तक दी हुई है ना, जी तो हमने पहली 3 टर्म्स होगी ना, exactly. ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकंड, दिस इज़ द थर्ड. सिंस वी सपोज टू कंपेयर देम तो पहली 3 तक करते हैं. nc1 2 to the n minus 1. What next? AX 1. What next? NC2 2 raised to the power n minus 2 n minus 2 and AX to the power 2. ax to the power 2. To avoid confusion इसको मैं अब erase कर रहा हूँ so that ये इसका part ना लगे आंसर का. This is not part of the answer. What do we do with this expression? What is NC0? 1. 2 raised to the power n and this is also 1. NC1. NC1 is Whenever we took 5C1, what did it used to become? 5. 5 तो ये n बन जाएगा. 2 raised to the power n minus 1 and then we've got ax. What are we going to do? Think about it. What are we going to do with NC2? इसको भी हम छोड़ देते हैं Why would we leave it like this for now? बिकॉज इसको अभी हम इसका कुछ फर्दर नहीं कर सकते. जब हम पिछले पार्ट से निकाल लेंगे. Then you're going to try to plug it in? यस Okay. NC2 and 2 raised to the power n minus 2 and a square x square. हाँ. What do we do now? नाउ वी नो कि जो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट जो सिर्फ कांस्टेंट आया है दैट इज 32. तो फर्स्ट टर्म से हमारे पास 32 आना चाहिए. सो व्हाट मतलब कि 2 को हम किस पावर के उस पर पुट करेंगे तो 32 आएगा. ऑलराइट, तो लेट्स रीअरेंज दिस फर्स्ट. 2n minus 1 पहले लिख लिया और n को a के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और x के साथ भी. ये तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं. जी और इसको भी nc2 लिख लें फॉर नाउ and 2 raised to the power n minus 2 and a square, and let's just remove the brackets. The question now said 32 minus 40x plus bx square. 32 minus 40x plus bx square. Is that right? so we can sort of compare. Ab comparing, what are we comparing now? The coefficients. Yes. So comparing the coefficients. You can just stop and observe ये क्या होगा. Now in this bracket up here, what are the coefficient? What's a constant term which does not have an x? Any- 2n. Yes. 2n is a constant, and over here the constant is 32. Now what raised to the power of 2 would give us 32? That's going to be 2 raised to the power 5. If you remember the rules of indices, n की value क्या आ गई? 5. 5. What do we do next? अब नाउ वी हैव n. तो हमें पता है कि जो एक्सपेंशन में पूरा n लिखा होता है वहाँ पे 5 है. ठीक है, अब हम कंपेयर x को करने जा रहे हैं. अब हम सेकंड टर्म को कर लेते हैं. तो ये x का कोएफिशिएंट है और ये x का कोएफिशिएंट है. तो वी कैन राइट 2 raised to the power n minus 1 n a is equals to negative 40. How much is the value of n? 5. ये हम यहाँ से इसको प्लग इन कर रहे हैं. 5 again into a is equals to negative 40. 2 raised to the power of 4 into 5a is equal to negative 40. How much is 2 raised to the power 4? 16. 16
into 5. 5a. Let's just write multiply signs now. Is equals to negative 40, and we can jump to conclusions over here. 16 divided by 5, and if we pick up a calculator, what does it come out to be? Minus 1 over 2. Minus 1 over 2. That's the value of a. We have the value of n. What do we do now? Draw another line Yes. and solve for the third part, which is asking us to find the value of Of b. b. अब b में अगर आपने देखना है कि कोएफिशिएंट क्या है, तो मैं उसके साथ ब्रैकेट्स डाल देता हूँ. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे ये है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सिर्फ b है. वी कैन राइट देम इक्वल टू ईच अदर. वी गॉट nc2 2 raised to the power of n minus 2 a square is equals to b. अब n की वैल्यू कितनी थी? 5c2 2 raised power 5 minus 2. a कितना था? नेगेटिव हाफ. नेगेटिव हाफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b. 5c2 is 10 if I'm not wrong. 2 raised to power 3 and negative 1 का square is going to be 1 over 4 is equals to b. So 10, this becomes 8 and 4 से डिवाइड कर देते हैं. b की वैल्यू comes out to be 20. Is that the final answer? Yes. Here you go. We have the value of n, a and b, and that's the final answer.